A very good morning to class 9 students. So today we are going to start notice writing. You all must be knowing what is a notice writing because it is generally it is in the syllabus of class 6 to 8 generally. So if you are in class 9, there is a possibility that you must be knowing what is a notice writing. So let's start notice writing. So a notice is a short composition which is direct, formal, straightforward in style. So it is very direct and straightforward. For example, when we write letter to your friend or anyone, it is not straightforward. We start something. We start by asking their whereabouts. For example, if you are writing letter to a friend, we generally start by asking how your friend is or something like that. So it is not kind of straightforward. In notice, what happens? Thing is very straightforward. You are not supposed to write very complicated thing, but you should write a very simple and direct direct style. So you have to write the things in very direct way. A notice is very important form of written communication. So notice is a written communication, not an oral one. It is written. And it is used by individuals and organization to convey information about functions, event and occasions, or to announce something that has happened or about to happen. So a notice can be written by an individual, for example by you or your friend or your class monitor, by a class teacher, by a principal. So a single individual can write a notice, or a particular organization can also write. Okay, organization means, for example, your school. Okay, a notice can be written by a school also, on behalf of a school or any particular organization. Okay, and to convey information about functions, event and occasion, or to announce something that has happened or about to happen. And what is the content matter of notice? A notice is, we write notice to convey a particular information. For example, if there is an essay competition which is going to be held in your school, or it is going to be conducted by the school, so we write notice informing the students that a notice writing is going to be conducted in the school. Okay, or for example any event like Republic Day celebration, annual day celebration, sports day celebration. So we write notice to inform the students about a particular event which has happened or it is about to happen. Generally in examination it consists of 5 marks. So how much marks? Of 5 marks generally it is asked in the examination, and it is about 5 marks in general. It can increase or decrease also, but in most cases it is of 5 marks. So let's move ahead. Points to be kept while writing notice. So what are the things we should keep in mind while writing notice? So when we write notice, the notice should have the name of the organization. For example, any notice is there in a school, it will certainly has the name of the institution. Where the notice begins with writing the name of institution, it should be mentioned that MDB English Medium School, Baloda Bazar. Okay, then there should be the that should it should be notice. After below the name of the organization, we have to write notice. Then we have to write date of issue, heading, subject, content. Then in the content part we have to write the main information for which we have written the notice. Then targeted group for which the notice has been addressed. For example, a debate competition is going to be conducted in your Vidyalaya, and then the debate is for only class 9 student. Then you have to mention that the debate is
going to be conducted, and it will be for class 9 students only, or for primary students, for secondary students, for class 10th and 11th students. So in particular we have to mention for which this a particular notice has been addressed, and things like why the notice is issued and all those stuffs. And we have to in particular mention the details of the event. For example, Republic Day is going to be celebrated, so we have to write on 26th January a Republic Day is going to be celebrated, or when that essay competition or particular things which are going to be conducted. We have to mention all those things, the time, at what time, at venue. For example, in school, if there is any hall, auditorium, or in the playground where that particular event is going to be conducted, we have to mention that also. And duration, for example, the debate is going to be conducted during CCA period. There is a period of co-curricular activities, or in PT period, in physical training period, or in second period. So we have to mention the duration, okay, and the venue also. So all those things we have to mention, and at last we have to write the person who has actually issued the notice, who has actually written the notice. For example, if an essay competition is going to be held, then in general that particular notice is written by your class teacher, your head, your house master, or by the principal also, okay, sometimes by class monitor also. So we have to write at the end. So here is the sample of notice. Here you can see the name of the school is there, St. Xavier Public School. It is a sample. In your case, you can write your school name, MDV English Medium School, Baloda Bazar, okay, and we have to write notice. This is very important. Notice. Then the date in which that particular notice has been written. Then the name of the event, inter school fancy dress competition or essay competition, anything can be there. And this is the main body part, main content of the notice. An inter-school fancy dress competition is being organized on 12th February at Tagore Theatre. In place of this, you can write an essay competition is going to be organized on any date which is going the date in which that event is going to be conducted. For example, on 7th February, on 1st of February, on 15th of January. And we have to write the place at school playground, at school auditorium. Those willing to take part in the items which our school will be presenting should come for selection on that particular date. We have to write all those students who are willing to take part in essay competition. In essay competition, they are supposed to come at particular time. We have to write the time and which place. And here, see here, only class 6 to 12 students are eligible. So this also we have to mention, that who are eligible for that particular competition. Dresses should be arranged by participants. Sometimes, for example, in fancy dress is there, the dresses are arranged by the school, or sometimes the dresses are arranged by the participant himself. So here it has been mentioned dresses should be arranged by the participant, and at last the name of the person who has written the particular notice, Vandita, and cultural secretary. Here you can write, headmaster can also write that notice, principal can write, your class teacher can write, class monitor can write. So here before name, signature is there. Okay, for example, Ram will sign here, and here it will be Ram Sahu, and his designation will be there, HM. So first signature will be there, then his name, then his designation. So these three things has to be written at the end of the notice. I hope you have understood how to write notice. So please start writing notice, sample notice.
For example, so in your assignment there is a possibility that a notice will be given, so you should start preparing for it, and within 1 or 2 days I will be uploading the assignment, and you have to complete it within a week. You have to make one notebook of 50 or 100 pages, very thin notebook you have to make. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को जो भी मैंने अभी बताया? अभी ये जो नोटिस मैंने पढ़ा है, नोटिस क्या होता है? नोटिस एक टाइप का कॉम्पोजिशन है, जैसे एक लेटर होता है वैसे ही नोटिस होता है। जैसे स्कूल में अगर डांस कंपटीशन होने वाला है, ऐसे होने वाला है, तो उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में नोटिस होने वाला है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में दैट पर्टिकुलर कोई भी इवेंट होने वाला है, उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। जैसे ऐसे कंपटीशन होने वाला है जनवरी में, हम मानते हैं कि मान लीजिए कि जनवरी में होने वाला, तो हम एक नोटिस लिखेंगे, तो इसे कहते हैं नोटिस राइटिंग। जो सूचना होता है ना हिंदी में, बस इंग्लिश में वो सेम नोटिस राइटिंग है। तो नोटिस कौन लिखता है? कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल आदमी कोई भी लिख सकता है, आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल होगा, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकता है, जैसे कि अपना स्कूल लिखेगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लिख सकता है, कॉलेज, कोई पर्टिकुलर कॉलेज भी नोटिस लिख सकते हैं। जैसे आप लोग एडमिशन लिए होंगे तो स्कूल की तरफ से कभी कभार जैसे कहीं एडमिशन होता है तो नोटिस निकालते हैं कि क्लास 8 का एडमिशन होने वाला है। जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो मतलब अपना जो भी क्लास 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने डिटेल्स स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी चीज़ें लिखते हैं ना, वो सब नोटिस राइटिंग में आता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, कल मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला था कि जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं उन्होंने स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो अगर स्कूल में जमा नहीं किए हैं तो वो स्कूल में आके जमा करें। तो वो भी एक टाइप का नोटिस राइटिंग है। हालांकि उसका फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट फॉर्मेट नहीं था वो, लेकिन जो मैसेज था वो एक टाइप का नोटिस ही था। ठीक है, तो नोटिस कैसे लिखते हैं? ऊपर में सबसे स्टार्टिंग में होगा स्कूल का नाम या फिर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम। फिर सेकंड में हम लोग को नोटिस लिखना है कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो नोटिस है कि लेटर है कि रिपोर्ट है, क्या है। और नोटिस है तो नोटिस को मेंशन करना पड़ता है। फिर वो नोटिस कब लिखा है वो लिखना पड़ता है। फिर जो हेडिंग है वो लिखना पड़ेगा। फिर मेन जो नोटिस में क्या क्या कंटेंट है, नोटिस किस चीज़ के लिखा गया वो लिखेंगे। फिर नोटिस किन के लिए लिखा गया, टारगेटेड ग्रुप फॉर होम दिस नोटिस हैज़ बीन रिटर्न, दैट वी हैव टू राइट। और उसके बाद फिर यही सब है। फिर नोटिस क्यों इशू किया गया है, फिर जो भी इवेंट होने वाला है ऐसे कंपटीशन पर्टिकुलर, उसमें कब होने वाला है, कितने टाइम होगा, कहाँ होगा, कितने टाइम के लिए होगा, ये सब चीज़ लिखना है। और किन के लिए कितने लोग रहेंगे, ये सब चीज़ लिखना पड़ता है। और सबसे लास्ट में साइन होगा, सिग्नेचर करेंगे जिसने नोटिस लिखा है। पहले सिग्नेचर, फिर नाम और उनका डेजिग्नेशन। वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने साइन किया, उसके बाद फिर वो साइन किनका वो अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद उनका डेजिग्नेशन क्या, फॉर एग्जांपल HM, क्लास मॉनिटर, प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है इसमें जिसने ये पर्टिकुलर नोटिस लिखा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे आएगा इंग्लिश मीडियम MDB हायर सेकेंडरी स्कूल बलौदा बाज़ार। फिर नोटिस लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा टाइम आपका, किस टाइम में पर्टिकुलर नोटिस लिखा गया, किस डेट में नोटिस लिखा गया वो लिखना पड़ेगा। फिर ये नोटिस किस लिए है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है उसके लिए है, या फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा कि आपको नोटिस लिखना है कि एक ऐसे कंपटीशन होने वाला है, या फिर डांस कंपटीशन होने वाला है, स्किट होने वाला है। तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में जो लिखा होगा आपको यहाँ पे वो सेम चीज़ लिखना है। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा ऐसे कंपटीशन है आपको, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर फैंसी ड्रेस मत लिख देना। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। इन द क्वेश्चन इट विल बी रिटन, यू आर राम और रानी राइट अ नोटिस about a debate competition or essay competition which is going to be held in your विद्यालय। so in that case here you have to write, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख देना, यहाँ पे नोटिस लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन में लिखा होगा किस इवेंट के लिए है, रिपब्लिक डे के लिए है, ऐसे के लिए है, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस जगह पे। उसके बाद फिर मेन जो कंटेंट है नोटिस आपको लिखना है, that essay competition is going to be held in your vidyalaya. All those who are interested in taking part, please give your name
to your class teacher, to your class monitor, anything you can write. और जब ये नोटिस के बाद आपके ख्याल रखना है कि कब होगा, कहाँ होगा, ये चीज़ लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो यही सब चेक करता है। और लास्ट में जो नोटिस किसने लिखा है वो सबसे पहले उनका उनका साइन होगा, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये नोटिस राइटिंग समझ में आया हो। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, ठीक है। थैंक यू।